So, hi everyone, good morning. Uh, so, let's start this discussion now. So, today is 1st of May 2026, and we have like a few very important news items that we'll be covering in today's newspaper analysis. Let's start with the first one. So, this is a non stopping affair. It started on 28th of February 2026 when everything, started with an attack on Iran by United States of America and Israel. So now, in a latest development, Iran has laid down a few more conditions to stop this war and to open Strait of Hormuz, which is a 33-kilometer wide passage. So let's start with the discussion now. So the third supreme leader of Iran, which is who is yet to make a public appearance, has laid down conditions specifically that he wants basically United States of America to remove the blockade from the end of the Strait of Hormuz so that the passage is open for the commercial shipping, right? But Mr. Trump, who is the 47th president of United States of America, is yet to respond positively on this, and the cost of this war is borne by people all around the world. The crude oil prices have reached all-time high of all-time high, which is 125 dollars per barrel, right? So this is a non-stopping affair, and we'll keep on discussing this in everyday's analysis. Then we have this particular news item which is attracting a lot of attention now, and it is basically related to the time limit for the abortion when it comes to the when it comes to a rape survivor who is eventually a minor. So we'll have a very detailed discussion about this news item on page number 6 when we'll reach to page number 6. So let's wait till we reach to page number 6. We'll have a very detailed discussion. Don't worry about that. We'll discuss about medical termination of pregnancy act, which was passed in 1971, and the latest amendment was done in 2021, and the three categories of three categories which were laid down in the medical termination of pregnancy act. And then also we'll discuss about section 3 of medical termination of pregnancy act. So let's keep a watch on that. And then we have another important statement which is, or observation which is made by the Union Finance Ministry, that state with the high with the revenue deficit may have to face the fiscal stress, and which is quite obvious. If your expenditure is more than your revenue, then at the end of the day it's not only the state governments but also the it's a common phenomenon that if you have the revenue deficit, then you have to face the fiscal stress, right? So nothing relevant in that, but now this is something which is very important. Maharashtra Day, we'll have a very brief discussion related to Maharashtra Day. So Maharashtra Day is celebrated on 1st of May every year, because Maharashtra was created as a separate state in 1960 through the Bombay Reorganization Act 1960, and this is the 66th Foundation Day of Maharashtra. And we have to understand one more thing, that through Bombay Reorganization Act of 1960, two states were created. First one was Maharashtra, and it was for basically Marathi speaking population, and the second one was Gujarat, which was for the Gujarati and Kutch or Kutchi speaking population. So Maharashtra was created for Marathi and Konkani speaking people, and Gujarati and Kutchi was basically for the Gujarat. So these two states were created on were created on 1st of May 1960 through Bombay Reorganization Act of 1960, and on 1st of May 2026 we are celebrating the 66th
Foundation Day of Maharashtra. So this is again one important news items. Then we have all the political news items which are again which are not so relevant when we talk about law entrance examination or specifically about common law admission test. So we'll keep on skipping those news items. बट स्टूडेंट्स एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम हमारे पास में डिस्कस करने के लिए, क्योंकि इसका जो स्टैटिक पार्ट है वो हमारे लिए काफ़ी रेलेवेंट हो जाता है, और इस न्यूज़ आइटम के या इस न्यूज़ पीस के बारे में हम डिस्कशन बहुत डिटेल डिस्कशन करेंगे. एंड दिस इज अबाउट पब्लिक अकाउंट्स कमिटी, popularly known as PAC. So Mr. K.C. Venugopal has been reappointed as the chairperson of Public Accounts Committee. Now, why Public Accounts Committee holds so much of relevance? The reason is very simple, because it is entrusted with a very big responsibility. And what is that responsibility, students? Responsibility is to audit government expenditure. Good morning everyone. Let's continue with the discussion now. So this Public Accounts Committee is entrusted with the responsibility to audit the government expenditure. And why this committee holds so much of relevance? Because at the end of the day, the government of India or the union government is responsible towards the people of this country, right? So there must be some kind of authority which has a proper say in auditing the government expenditure. Now, so this is the current part, or this is relevant for the current affairs, that Public Accounts Committee के नए chairman K.C. Venugopal, who is a member of parliament from Indian National Congress, ये इसका current aspect है. Let's talk about the static aspect of this news item. So static GK बहुत सारे entrance examination है, common law admission test, all India law entrance test, MSCT, CLAT and many more entrance examination, जिनमें static part बहुत relevant हो जाता है. अब static part के बारे में अगर हम discussion करें तो एक चीज जो सबसे ज़्यादा relevant हो जाती है हमारे लिए, that is origin. The point of origin of Public Accounts Committee. So origin was in 1921. Public Accounts Committee was established in 1921 and it was established under the Government of India Act 1919, popularly known as Montfort Reforms or Montagu-Chelmsford Reforms 1919. Right? So this is the first thing that we have to understand. The entire idea of Public Accounts Committee came into existence through the Government of India Act 1919 and finally it was established in 1921. Now moving on, the chairperson of Public Accounts Committee is always appointed by the Speaker of Lok Sabha. This is the next point that we have to understand. The chairman must be appointed by the Speaker of the Lok Sabha and it consists of, the Public Accounts Committee consists of 22 members. 22 members होते हैं स्टूडेंट्स, और इनमें से हम 15 मेंबर्स जो होते हैं इस कमेटी के वो लोकसभा से सिलेक्ट किए जाते हैं और 7 मेंबर्स जो होते हैं वो राज्यसभा से सिलेक्ट किए जाते हैं. द रीज़न इज़ वेरी सिंपल कि 15 मेंबर्स लोकसभा से क्यों सिलेक्ट किए जाते हैं, बिकॉज लोकसभा इज़ नोन एज हाउस ऑफ पीपल, जहाँ पर डायरेक्ट इलेक्ट करके लोग लोकसभा पहुँचते हैं, जिनको एलिजिबल वोटर्स इस कंट्री के डायरेक्टली इलेक्ट करते हैं. डेमोक्रेसी का पूरा आइडिया ही होता है द मोर इन्वॉल्वमेंट ऑफ पीपल इन द डिसीजन मेकिंग. So this is the entire idea of Public Accounts Committee came into existence in 1921 through the Government of India Act 1919.
It consists of 22 members, 15 members to be elected from the Lok Sabha, 7 members को हम राज्यसभा से elect करेंगे. चेयरपर्सन हमेशा लोकसभा स्पीकर अपॉइंट करते हैं और 2026-27 फाइनेंशियल ईयर के लिए किसको अपॉइंट किया गया? अपॉइंट किया गया मिस्टर केसी वेणुगोपाल को. इनका रीअपॉइंटमेंट है. इसके पहले भी यही चेयरमैन थे पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम. अगर आप लोग के कोई भी क्वेश्चंस होते हैं सो प्लीज कीप ऑन आस्किंग योर क्वेश्चंस. दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड द रेलेवेंट पार्ट. जब तक आप अपने सवाल नहीं पूछेंगे फिर इस सेशन का कोई मतलब नहीं बनता. तो अगर आपको कहीं भी किसी भी तरीके का कोई भी डाउट है सो प्लीज कीप ऑन आस्किंग योर क्वेश्चंस. नाउ again very new kind of demand which has been raised by the Indian National Congress, that they are basically demanding that right to vote must be made a fundamental right. It must be made a fundamental right. Now at this point of time आपको बहुत सारे अलग अलग एग्जामिनेशन में क्वेश्चन मिल सकता है कि what is the nature of right to vote, whether it's a fundamental right or executive right or a constitutional right or a legal right or a statutory right. You might get n number of options when it comes to right to vote. So let's understand this. Right to vote is a statutory right under the representation of People's Act 1950. So this is the nature of right to vote. It is a statutory right provided under the representation of People's Act 1950, and section 19 of representation of People's Act 1950 clearly states this, that any ordinary resident of India who is above the age of 18 and not barred by any law is eligible to vote. So the proposition is absolutely clear. So as per the section 19 of the representation of People's Act 1950, अगर आप एक ordinary resident हैं भारत के, इंडिया के, और आपकी उम्र 18 साल से ज़्यादा है, if you are above the age of 18, आप प्योरली एलिजिबल हैं वोट करने के लिए. सो इट इज़ अ स्टैट्यूटरी राइट. और सबसे लेटेस्ट अफर्मेशन सुप्रीम कोर्ट का आया 2023 में. एक बहुत इंटरेस्टिंग जजमेंट था. कभी इससे रिलेटेड अगर हम डिस्कशन करेंगे देन श्योरली विल डिस्कस अबाउट दिस जजमेंट एज वेल. बट अभी सिर्फ हम नॉमेनक्लेचर जान लेते हैं जजमेंट का. अनूप बरनवाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. दिस जजमेंट वाज डिलीवर्ड इन अप्रैल 2023 और इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने आखिरी बार ये बोला था, तो फॉर द लास्ट टाइम, अभी इसके बाद इस पर कोई लेटेस्ट डेवलपमेंट नहीं है तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि लास्ट टाइम है. सो इन दिस जजमेंट द सुप्रीम कोर्ट मेड इट एब्सोल्युटली क्लियर दैट राइट टू वोट इज अ स्टैट्यूटरी राइट. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट. सो बेसिकली हम जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम्स हैं हम सबके बारे में कुछ ना कुछ डिस्कस करना चाहेंगे, बिकॉज लॉ इज सच अ प्रोफेशन जिसमें आपके रिस्पेक्टिव लॉ स्कूल्स में आपको एक चीज़ बताई जाएगी दैट यू हैव टू फॉलो अ बेसिक कोर फिलोसफी, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स मास्टर ऑफ नन. आपको कुछ इन्फॉर्मेशन हर एक चीज़ के बारे में होनी चाहिए. नाउ कमिंग बैक टू द मोस्ट एंटिसिपेटेड टॉपिक फॉर द डे विच इज़ the Medical Termination of Pregnancy Act 2021, which was for the first time it was passed in 1971 and it was amended in 2021. Now why this news item is so relevant for us, क्योंकि अभी एक बहुत इंटरेस्टिंग नॉट इंटरेस्टिंग एक्चुअली बहुत एक इम्पॉर्टेंट केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था, जहाँ पर बेसिकली इसमें एक 15 ईयर ओल्ड रेप सर्वाइवर थी जिसकी 30 वीक ओल्ड प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करना था. अब इसमें जो एक कैच आ जाता है वो क्या है कि व्हेन
it's beyond 24 weeks. So basically there are three categories under the Medical Termination of Pregnancy Act 2021, and we'll discuss one by one. हर एक category को हम discuss करेंगे. First category is up to 20 weeks, then the second category is from 20 weeks to 24 weeks, and then we have the third category beyond 24 weeks. तो ये मेडिकल टर्मिनेशन जो होना था इस प्रेगनेंसी का, ये एम्स दिल्ली में होना था, और एम्स दिल्ली तीसरी बार सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पे पहुंचता है. और वो बेसिकली एम्स जो था वो ये डिमांड कर रहे थे कि इस प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करने का जो ऑर्डर है इसको विड्रॉ कर ले सुप्रीम कोर्ट. बट सुप्रीम कोर्ट अपने स्टैंड पे बहुत फर्म रहा, और उन्होंने बोला, सुप्रीम कोर्ट ने, जस्टिस सूर्यकांत ने, कि विल अलाउ दिस बिकॉज she is a 15-year-old child, and how could we expect a child to give birth to another child? The logic was very simple. How could we allow a child to give birth to another child? Right? Absolutely understandable point from the Supreme Court of India. Now let's talk about the legal concepts which are involved in this topic. One by one हम discussion करेंगे. So let's start. So this act, Medical Termination of Pregnancy Act, for the first time it was passed in 1971, and lastly it was amended in 2021. So as per the, and in common parlance, this is known as MTP Act, Medical Termination of Pregnancy Act. So MTP Act 2021 में हम तीन कैटेगरीज हैं. देयर आर थ्री डिफरेंट कैटेगरीज जिनके बारे में हम डिस्कस करेंगे अभी. एंड दीज थ्री कैटेगरीज आर, फर्स्ट वन इज, एंड दिस मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट legalized, this specific statute legalized abortion in certain circumstances. What are the different circumstances when abortion is allowed? Now this MTP Act 2021 doesn't allow termination of pregnancy as a matter of personal choice or family planning. आप या कोई भी ये बोल करके मेडिकल या टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी डिमांड नहीं कर सकता दैट दिस इज माय पर्सनल चॉइस, I have bodily autonomy, I want to terminate the pregnancy. No, you are not allowed to do that. There are certain circumstances which are described in section 3 of the section 3 of Medical Termination of Pregnancy Act 2021. Circumstances when termination of pregnancies allowed. Right, so let's talk about three different circumstances under the Medical Termination of Pregnancy Act 2021, and the first one is, first category is when the pregnancies up to 20 weeks old. Right, so it is allowed in case of contraceptive failures and other circumstances which are described under section 3 of the Medical Termination of Pregnancy Act 2021. And to
terminate pregnancy under the first category, you need or the person need approval from one registered medical practitioner. Then comes the second category. And what is the second category? When the pregnancy is somewhere between 20 to 24 weeks old. In the case of sexual assault or a rape survivor, or there is some kind of fetal malformation, मतलब कि जो बच्चा जन्म लेने वाला है उसका जो फॉर्मेशन है दैट इज नॉट करेक्ट. मतलब अगर वो पैदा होगा बच्चा, अगर वो जन्म लेगा बच्चा, इफ दैट चाइल्ड इज बॉर्न, तो उसके अंदर बहुत सारी मेडिकल एनॉमलिटी हो सकती हैं. सो दिस इज द सेकेंड कैटेगरी. एंड द थर्ड वन इज व्हेन द प्रेगनेंसी इज बियॉन्ड 24 वीक्स ओल्ड. सिमिलर ग्राउंड्स हैं कि फिजिकल या मेंटल डिफॉर्मेलिटी हो सकती है, जो चाइल्ड जो बॉर्न होने वाला, जो बच्चा जन्म लेने वाला, उसके अंदर किसी तरीके का फिजिकल या मेंटल डिफॉर्मेलिटी हो सकता है, या जो विक्टिम है वो रेप या सेक्सुअल असॉल्ट सर्वाइवर है, या बहुत ग्रेव थ्रेट है मदर की हेल्थ को, तब 24 वीक्स बियॉन्ड जो प्रेगनेंसी होती है उसका टर्मिनेशन अलाउ किया जाता है. एंड टू गेट द अप्रूवल अंडर द थर्ड कैटेगरी, द विक्टिम नीड्स टू गेट द अप्रूवल बाय अ मेडिकल बोर्ड which is to be constituted by the respective state government. If you are from Uttar Pradesh, तो उत्तर प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट उस मेडिकल बोर्ड को कॉन्स्टिट्यूट करेगी जो अप्रूव करेगा विक्टिम की प्रेगनेंसी को. राइट. सो दिस रिमेन्स अ वेरी वैलिड पॉइंट ऑफ डिस्कशन. वी हैड डिस्कस्ड सो मेनी थिंग्स अंडर दिस न्यूज आइटम. To begin with, we had the objective of Medical Termination of Pregnancy Act 2021. Then we have a discussion about Section 3 of the Medical Termination of Pregnancy Act 2021, which provides for the grounds, the grounds for the medical termination of pregnancy. Then we discussed the three different categories. First one is when the pregnancy is up to 20 weeks old. Then the second category when the pregnancy is somewhere between 20 to 24 weeks old. And the third category is when the pregnancy is beyond 24 weeks old. And in the current discussion, the pregnancy was 30 weeks old, but यहाँ पर victim की age was only 15 years and she was a rape survivor. That's why the Supreme Court of India made a very sensitive remark that how could we allow a child to give birth to another child, and that was a very gettable and understandable point. So now with this we'll move to the next point. We'll follow a very simple philosophy. Jack of all trades, master of none. Will have a very detailed discussion जहाँ पर हमें चाहिए होगा, और उसके बाद हम जिनमें हमें कम डिस्कशन करना होगा उसमें हम थोड़ा सा उस हिसाब का भी पॉइंट मेंटेन करके रखेंगे. Now moving on to the next point. So this article is specifically related to the recent protest which happened in Noida. It was related to the increase in the minimum monthly wage. उसको लेकर के पूरा प्रोटेस्ट हुआ था. फिर उस पर कुछ स्ट्रिक्ट एक्शन लिया यूपी गवर्नमेंट ने. और अभी रिसेंटली कल के न्यूज़पेपर में आप लोगों ने इसके बारे में डिस्कस किया होगा कि CPIM का एक विंग है जिसने इस पूरे प्रोटेस्ट को जिस तरीके से यूपी गवर्नमेंट ने हैंडल किया, उस चीज़ को इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के पास में उन्होंने रिपोर्ट किया. बिकॉज उनका मानना ये था कि जो भी एक्शंस यूपी गवर्नमेंट ने लिए हैं अगेंस्ट द लेबरर्स, वो प्योरली इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के जो प्रिंसिपल और एथिकल नॉर्म्स हैं उनको वॉयलेट कर रहा था.
अब हम आज इसके बारे में क्यों डिस्कशन कर रहे हैं? रीज़न बहुत सिंपल है स्टूडेंट्स, क्योंकि आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं 1 मई को। हम दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। पहला हम लोगों ने डिस्कशन किया, टुडे वी आर सेलिब्रेटिंग द 66th फाउंडेशन डे ऑफ महाराष्ट्र 1960 में थ्रू बॉम्बे रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 1960 बॉम्बे महाराष्ट्र वाज क्रिएटेड। एंड द सेकेंड वन इज टुडे वी आर ऑल्सो सेलिब्रेटिंग द इंटरनेशनल लेबर डे। और इस साल एक और रिलेवेंट रीज़न हो जाता है इसके बारे में डिस्कशन करने के लिए, और वो रीज़न स्टूडेंट्स ये है कि जो नए लेबर कोड्स हैं वो 2026 में ही इम्प्लीमेंट किए गए। वो एक और एडिशनल रीज़न हो जाता है कि इंटरनेशनल लेबर डे हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट हो जाता है। स्टूडेंट्स याद रखिएगा, व्हेन वी टॉक अबाउट इंटरनेशनल लेबर डे, इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1886। बहुत एक अग्रेसिव प्रोटेस्ट हुआ था शिकागो में 1886 में। उसके बाद इंटरनेशनल लेबर डे का सेलिब्रेशन जो था वो स्टार्ट कर दिया गया था। और इंडिया में 1 मई 1923 को पहली बार इंटरनेशनल लेबर डे ऑब्जर्व किया गया। चेन्नई में सेलिब्रेट किया गया, चेन्नई में से सेलिब्रेट किया गया था। सो ये भी आप एक फैक्ट याद रख सकते हैं कि फॉर द फर्स्ट टाइम इट वाज सेलिब्रेटेड इन इंडिया इन 1923। ठीक है। एंड ऑल्सो ILO, विच इज इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, it was established in 1919 through Treaty of Versailles, and it became the first specialized agency of the United Nations. It was the first specialized agency of the United Nations. United Nations came into existence in 1945, and ILO was in existence before the United Nations came into existence. So when a League of Nations was dismantled, so International Labour Organization became the first specialized agency of the United Nations. So first time. Now the current discussion is about the International Labour Day, which is observed on 1st of May, and it is also known as May Day. अब आप मे डे जो इसको प्लीज़ आप उस चीज़ से रिलेट मत करिएगा कि जब कोई एविएशन सेक्टर में कोई ट्रेजेडी होने वाली होती तो पायलट ऑलवेज से मे डे मे डे मे डे। दैट मे डे इज डिफरेंट, दिस मे डे इज अबाउट इंटरनेशनल लेबर डे, राइट। सो फर्स्ट टाइम इट वाज सेलिब्रेटेड इन 1886 एंड थीम फॉर दिस ईयर इज ensuring a healthy psychological working environment, right? Now moving on to the next point. So this topic basically starts with the latest case where the protest happened. और protest, ये पूरा का पूरा protest कहाँ पे हुआ था? protest हुआ था पूरा का पूरा नोएडा में वेज हाइक को लेकर के। तो इसके बारे में तो आप लोगों ने शायद डिस्कशन किया होगा, या आप लोगों ने इसके बारे में कुछ ना कुछ चीज़ें कवर की होंगी। और बट अभी के कॉन्टेक्स्ट में जो चीज़ें हमारे लिए रेलेवेंट हो जाती हैं, हम थोड़ा सा उसके बारे में अपने आप को अवेयर रखेंगे। और अभी के कॉन्टेक्स्ट में बस यही रेलेवेंट है कि इस आर्टिकल को मेनली न्यूज़पेपर में देने का भी जो पॉइंट है वो यही है, बिकॉज टुडे वी आर सेलिब्रेटिंग इंटरनेशनल लेबर डे। और इंडिया में एक स्पेसिफिक क्लास ऑफ वर्कर्स हैं जिनकी कंडीशन अभी भी बहुत थोड़ा सा अनस्टेबल है। गिग वर्कर्स जिनको हम बोलते हैं, जो आपके यहाँ पे 10 मिनट में ऑर्डर्स डिलीवर करते हैं, जो आपको एक जगह से दूसरी जगह ले करके जाते हैं। ओला, उबर, रैपिडो राइडर्स, ड्राइवर्स, डिलीवरी मैन, ऑलमोस्ट 29 मिलियन के आसपास गिग वर्कर्स हो जाएंगे 2030 तक इंडिया में। बट गिग वर्कर्स को रेगुलेट करने के लिए स्टिल वी डोंट हैव अ स्पेसिफिक पीस ऑफ लेजिस्लेशन जो इनके वर्किंग कंडीशंस को, इनके राइट्स को रिकॉग्नाइज और एक्नॉलेज करे, राइट। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट। तो अभी आप लोगों ने लेटेस्ट न्यूज़ आइटम में ये कवर किया होगा कि यूएई
यूनाइटेड अरब ऑफ एमिरेट्स, इन्होंने एग्जिट ले ली है ओपेक से. नाउ ओपेक और ओपीईसी इज अ ग्रुप एंड दिस इज एन एब्रीविएशन ओपीईसी, जिसका एक्सपेंशन है, अगर आप इसको थोड़ा सा एक्सपैंड करेंगे, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज. और OPEC is basically it was formed in September 1960. September 1960. अब अगर हम ओपेक के बारे में बात करें तो हमें एक चीज़ के बारे में और बात कर लेनी चाहिए कि इनके जो फाउंडिंग मेंबर्स थे वो कौन कौन सी कंट्रीज थी. तो फाउंडिंग मेंबर्स के बारे में एक छोटा सा हाईलाइट आप याद रखिएगा. ईरान, वेनेजुला, इराक, Saudi Arabia and Kuwait. ठीक है, so these were the 5 founding members of OPEC. Now it was established, the entire idea of OPEC came into existence through Baghdad Conference, and for the first 7 years from 1960 to 1967 it was headquartered in Geneva, Switzerland, and since 1967 till date it is headquartered in वियना, ऑस्ट्रिया. इसका जो अभी करंट में सेक्रेटेरिएट है, इट इज लोकेटेड इन वियना, ऑस्ट्रिया. अब यूएई के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बात करें तो यूएई के कॉन्टेक्स्ट में स्टूडेंट्स एक और चीज़ रिलेवेंट हो जाती है. चलो हम मान लेते हैं 2026 में यूएई हैज़ लेफ्ट और विथड्रॉन फ्रॉम ओपेक, बट यूएई ने ज्वाइन कब किया? सो यूनाइटेड अरब ऑफ एमिरेट्स ने ओपेक ज्वाइन किया 1967 में. तो ये एक और रेलेवेंट चीज़ हो जाती है. अब लेटेस्ट आप याद रखिएगा, ब्राज़ील ने 2025 में ज्वाइन किया था ओपेक को, और ये एक रेलेवेंट पॉइंट है. और ओपेक के बारे में अभी इतना डिस्कशन शायद स्टैटिक पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए सफिशिएंट होगा कि किस कॉन्फ्रेंस के थ्रू इसका फॉर्मेशन हुआ, फाउंडिंग मेंबर्स कौन कौन से थे, हेडक्वार्टर इनिशियली सेक्रेटेरिएट कहाँ लोकेटेड था, अभी कहाँ पर है, एक्सपेंशन क्या है, यूएई ने कब ज्वाइन किया, यूएई ने कब लीव किया. सो ऑल दोज थिंग्स आर स्टिल रेलेवेंट. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट. So we know this India has recently concluded its 23rd free trade agreement with New Zealand, और काफ़ी इंडिया का जो 100% एक्सपोर्ट है, 100% एक्सपोर्ट को टैरिफ फ्री कर दिया है. अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हैं कि the government of India is aiming that in next 5 years it will double the bilateral trade to $5 billion. Next important year कि under this free trade agreement a very important commitment has been made by New Zealand that in next 15 years New Zealand will invest approximately $20 billion in the Indian economy, right? And this free trade agreement was signed in New Delhi, and it was signed by India's Commerce Minister Mr. Piyush Goyal and Todd Mackley, जो न्यूजीलैंड के काउंटर पार्ट हैं,
uh, he is also basically the commerce or trade minister of New Zealand. Todd Macleod, Piyush Goyal ने इस agreement को sign किया. You must have discussed all the important relevant point about this, and also it provides कि this free trade agreement will also provide 5,000 professional visas to the skilled professionals for a period of up to 3 years. मतलब इंडिया से हर साल 5,000 लोगों को 5,000 लोगों को प्रोफेशनल वीज़ा प्रोवाइड करेगा न्यूजीलैंड, और ये स्किल्ड प्रोफेशनल्स जो होंगे, और ये 3 साल तक जा करके 3 साल तक के लिए ये न्यूजीलैंड में रह सकते हैं. सो इट विल ऑल्सो इंक्रीज द प्रेजेंस ऑफ इंडियन डायस्पोरा इन न्यूजीलैंड. सो दैट रिमेन्स अ वेरी very good point of discussion. Then moving on to the next important point. So Antonio Guterres, who is the 9th Secretary General of United Nations Security Council, इनका जो सेकेंड टर्म है ये अभी एक्सपायर होने वाला है, और अभी डिस्कशन स्टार्ट हो गया है रिलेटेड टू द अपॉइंटमेंट ऑफ न्यू Secretary General to the United Nations Security Council. अब स्टूडेंट्स, अगर हम इसके बारे में एक बहुत ब्रीफ डिस्कशन करें, तो सबसे पहली चीज़ आपको याद रखनी होगी कि स्पेसिफिकली आर्टिकल 97 ऑफ द यूएन चार्टर डील्स विद the appointment of Secretary General. अब प्रोसेस क्या होता है? प्रोसेस यहां से हम स्टार्ट करेंगे. The selection of the next UN Secretary General is underway. On April 21-22, 4 candidates, 2 women and 2 men, pitched their records of public service and leadership to the UNGA. An informal interactive dialogue. The UN Charter defines Secretary General as the UN's chief administrative officer who oversees the work of the UN Secretariat and fulfills any other functions and duties. Secretary General has the authority to appoint personal envoys, as Antonio Guterres has now done for the current West Asia conflict, often described as the world's chief diplomat. So please याद रखिएगा, अगर एग्जाम में थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए आपको पूछ लिया जाए. It is also known as world's chief diplomat. Now, the UN Charter states that the Secretary General is appointed by the General Assembly on the recommendations of the Security Council. This means that permanent members have a significant say in who gets elected. Now, while the term of a Secretary General is technically discretionary, incumbents have since 1981 voluntarily limited themselves to 2 terms. So basically now let's talk about the appointment process. So आपको ये तो पता होगा, this is a very basic fact. बेसिक फैक्ट नहीं भी पता है, कोई दिक्कत नहीं, रिलैक्स करना, चिल पिल लेनी हम लोग को, एकदम कोई टेंशन वाली बात नहीं. देन दिस बेसिक फैक्ट इज कि सिक्योरिटी काउंसिल में टोटल 15 मेंबर्स होते हैं, 5 परमानेंट मेंबर्स and 10 non-permanent members. अब अगर if anyone is seeking appointment as the member of as the chairperson of the United Nations Security Council, तो उसको बेसिकली या यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, तो उनको फिर क्या करना होगा? अब उनको करना ये होगा कि टोटल 15 मेंबर्स जो होते हैं, 5 परमानेंट मेंबर्स, और ये 5 परमानेंट मेंबर्स कौन कौन से होते हैं? जिनके पास में वीटो पावर है, एवरीबडी नोज, फ्रांस, रशिया फॉर्मली नोन एज द यूएसएसआर, देन फ्रांस, रशिया, चाइना, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड द यूनाइटेड किंगडम. तो ये हो गए आपके परमानेंट 5 मेंबर्स, और ये हो गए आपके 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स.
तो अपॉइंटी को टोटल 9 वोट्स चाहिए होते हैं आउट ऑफ 15. द अपॉइंटी मस्ट सिक्योर 9 वोट्स टू बी अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट चीफ, राइट. अब 9 वोट्स के साथ में एक प्री रिक्विजिट और है कि ये जो 5 परमानेंट मेंबर्स हैं जिनके पास में वीटो पावर होती है, आपको ये 5 आउट ऑफ 5 वोट सिक्योर करने हैं. अगर किसी भी मेंबर स्टेट ने, हेयर यू गेट 14 वोट्स, बट मान लीजिए लेट्स टेक एग्जांपल कि चाइना ने वीटो लगा दिया आपका अपॉइंटमेंट, योर अपॉइंटमेंट वुड बी कैंसल्ड. सो यू नीड मिनिमम 9 वोट्स. बट आपको जो परमानेंट मेंबर्स हैं उनमें 5 वोट सिक्योर करने होते हैं. आपको इंश्योर करना रहता है कि कोई भी परमानेंट मेंबर आपके अगेंस्ट वीटो यूज ना करे. देयर इज नो फिक्स्ड टेन्योर टर्म. फिक्स्ड टर्म इज 5 years. बट आपको ऐसा नहीं कि आपका रीअपॉइंटमेंट कितनी बार हो सकता है. बट ये कन्वेंशन है जो बहुत लंबे टाइम से फॉलो हो रहा है कि 2 बार से ज़्यादा कोई अपना अपॉइंटमेंट नहीं सीख करता है. आप इसको यूनाइटेड नेशंस के जो प्रेसिडेंट होते हैं उससे भी आप इसको थोड़ा सा रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि यूनाइटेड नेशंस के जो प्रेसिडेंट होते हैं उनका भी अपॉइंटमेंट 2 बार से ज़्यादा नहीं हो सकता है, राइट. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट. अभी मैं देख लेता हूँ, ठीक है, आप लोग के कुछ क्वेश्चंस. ओके फाइन. सो मूविंग ऑन. वर्ल्ड अफेयर्स में कुछ चीज़ें बहुत कॉमन है. द फर्स्ट वन इज इट स्टार्टेड इन 2022, February 2022, रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट. सो अनदर राउंड ऑफ नेगोशिएशंस आर एक्सपेक्टेड. बहुत बार ऐसा नेगोशिएशन हो चुका है. लेट्स प्रे कि कुछ सब्सटैंशियल आउटकम इसका निकल के आए, बिकॉज रशिया इज़ अबाउट टू सेलिब्रेट द विक्ट्री डे परेड. रशिया इज़ अबाउट टू सेलिब्रेट विक्ट्री डे और उसके लिए एक पूरा परेड ऑर्गेनाइज कर रहे हैं. वो 9 मई को होगा वो. इसके लिए वो एक ब्रीफ सीज फायर प्रपोजल उन्होंने प्रेजेंट किया. और जोहरान ममदानी हु इज़ द मेयर ऑफ न्यूयॉर्क, उन्होंने बोला है भाई नो आई हैव इमेंस रिस्पेक्ट फॉर जोहरान ममदानी when it comes to giving this statement, right. He has basically asked King Charles to just return the Kohinoor diamond to India, right. So yeah, that's a very good thing said by Mr. Zohran Mamdani. And please do like the video if you're finding it interesting, right. Then please do like the video. I mean, see, there should be some motivating factor apart from the salary that we are getting, right. That's obviously a joke, right. So Lebanon says Israel. So basically, now this is something which is very unfortunate for Lebanon. So Litani river के जो नीचे का एरिया, so कुछ लेबनान ऐसे दिखता है, right. Here we have Syria, if I'm not wrong. Here we have Syria. I mean, I'm not sure. और यहाँ पर ये लितानी रिवर है और ये पूरा लेबनान है, राइट. ये पूरा लेबनान है. अब ये लितानी रिवर है, इसके नीचे का जो एरिया है इट इज़ कंसिडर्ड एज सदर्न लेबनान. और रिसेंटली अभी क्या हुआ है कि इजराइल ने सदर्न लेबनान विच इज़ बिलो द लितानी रिवर पे जितने भी ब्रिज थे जो सदर्न लेबनान को लेबनान से कनेक्ट करते थे, इनको इन्होंने पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया, क्योंकि ये सदर्न लेबनान जो एरिया है यहीं से हिजबुल्लाह ऑपरेट करता था. अब हिजबुल्लाह के यहाँ से ऑपरेट करने का रीज़न क्या था? ईरान इजराइल से डायरेक्ट बॉर्डर शेयर नहीं करता है, तो उन्होंने एक प्रॉक्सी नेटवर्क डेवलप किया. हिजबुल्लाह, हाउदीज़ और हमास, 3 के प्रॉक्सी नेटवर्क थे. हमास तो भी डिसमेंटल हो चुका है. हिजबुल्लाह सदर्न लेबनान डायरेक्ट लैंड बॉर्डर शेयर करता है इजराइल के साथ में, तो ये बहुत क्लियर एक्सेस प्रोवाइड करता था हिजबुल्लाह को इजराइल पे अटैक करने के लिए. इसीलिए इजराइल ने लितानी रिवर पे जितने ब्रिजेस थे उनको डिस्ट्रॉय करके पूरे सदर्न लेबनान का जो कंट्रोल था वो अपने पास में ले लिया. और लेटेस्ट स्ट्राइक में 9 सिविलियंस हैव बीन किल्ड सेट बाय द गवर्नमेंट ऑफ लेबनान. एंड देन वी हैव अभी तो इनको थोड़ा सा पार्डन मिल गया है, एमनेस्टी मिल गई है जो न्यूली इलेक्टेड प्रेसिडेंट है ओंग मिंग हेंग, who was formerly the military chief मिंग ओंग हेंग. उन्होंने इनको एमनेस्टी दी है. अब इनको हाउस अरेस्ट में मूव किया जाएगा और इनका जो टर्म था उसको 1/4 कर दिया था. एंड 2021 में इनको अरेस्ट किया गया था. एंड दैट वाज अ बिग डे फॉर म्यांमार, क्योंकि यहीं से फिर जुंता रिबेलियन स्टार्ट हो गया था. मिलिट्री और आर्मी फोर्सेस के बीच का जो कॉन्फ्लिक्ट था वो स्टार्ट हुआ था. Then we have all about Indian Premier League. So yeah, students, this is all about today's analysis.
अगर आप लोग को पसंद आया देन डू लाइक द वीडियो। अपना जो भी आपके जो भी रिकमेंडेशंस हैं, अगर आपको कुछ लेटेस्ट एडिशन चाहिए इस पूरे एनालिसिस में, आपका कुछ भी सजेशन, यू कैन पंच इन योर सजेशंस इन द कमेंट सेक्शन। एंड दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। टेक अ गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। विल सी यू टुमारो एट द सेम टाइम। टिल देन I'll take your leave now. Bye bye and have fun. थोड़ा सा चीज़ों को रिवाइज करते रहिए। वी स्टिल हैव 221 days before CLAT 2027, which is scheduled to take place on 6th of December 2026. On that note, just sayonara, bye bye, we'll see you tomorrow.